Hello students, my name is Abhishek Sir and this is your English classroom Excel Learning where we post English chapters explanation videos. Today I have brought a story for class 9 ICSE students and the story is Bonku Babu's Friend written by Satyajit Ray. ओके सो बहुत ही अच्छा बहुत ही फैसिनेटिंग एक स्टोरी है। आप ये अब ये जो स्टोरी है इसका बंगाली वर्जन भी है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा संडे सस्पेंस में। आप वहां पे जाके भी एक बार ये स्टोरी सुन सकते हो, क्योंकि जितना भी कोई भी स्टोरी हो कोई भी पोएम हो, आप जितना अच्छा विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा आप अपनी दिमाग में उसको रख सकोगे। ओके सो इट वुड बी बेटर इफ यू गो एंड listen to the audio version of this particular story. रेडियो मिर्ची में आप लोगों को मिल जाएगा। So without wasting any more time, let's get into the chapter. Actually, I thought to make this chapter's video into 3 parts, but I think it would be very difficult. Okay, आशा करता हूं मैं इसे 2 पार्ट में करूंगा। अगर 2 पार्ट में से करूंगा तो सेकेंड जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली लेंथी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जो होगा भलाई के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। पहले हम लोग स्टोरी तो शुरू करते हैं। सो प्लीज टेक योर बुक एंड टेक अ पेंसिल आल्सो सो दैट यू कैन स्क्रिबल डाउन ऑल द पॉइंट्स। ओके एंड ओपन एट पेज नंबर 69। बिफोर स्टार्टिंग about the author, we all should know Satyajit Ray 1921 to 1992 was one of the India's greatest filmmakers, author, illustrator and music composer. Ray is celebrated for works including the OPU trilogy. The OPU trilogy अगर possible हो तो please आप लोग देखो ये फिल्म द ओपू ट्रायोलॉजी। एक्सीलेंट, बहुत 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 ही अच्छा है ये वाला। ओके, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी एंड चारुलता। बोंकू बाबू's Friend and excerpt from 3 days stories from Satyajit Ray has been chosen because of its popularity among young readers. तो यंग रीडर्स जितना है उनमें ये स्टोरी लेके ये स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। तो इसीलिए ये जो स्टोरी है आपके आईसीएससी के अंदर ये स्टोरी दिया गया है। ओके, अब Bonku Babu's Friend, which was conceptualized a long time ago, is an inspiration for Indian writers of science fiction. So आज से बहुत 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 दिन पहले स्टोरी लिखा गया है, but this is the source of energy. This story is the source of inspiration for many Indian writers to write about science fiction. Bonku Babu, a gentle school teacher who was bullied by all who knew him, stumbles upon an alien spacecraft. This discovery gives him the confidence to stand up against all those who mocked and taunted him. A gentle reminder that standing up to bully is the only way to overcome this social evil. तो यहाँ पे बोंकू बाबू जो कैरेक्टर है ये एक स्कूल टीचर है, एक्सपीरियंस्ड स्कूल टीचर, बट ही इज ऑलवेज द विक्टिम ऑफ बुली ऑफ अदर्स। इवन स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स भी इसे बहुत तंग करते हैं, स्टूडेंट्स भी इसे बहुत परेशान करते हैं। और मानो कि इसे परेशान करना, इन्हें परेशान करना, बोंकू बाबू को परेशान करना एक ट्रेडिशन सा बन गया है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और मिडिल एज्ड या फिर ग्रोन अप पीपल के लिए भी ये ट्रेडिशन सा बन गया है। ओके, तो फाइनली वन डे व्हाट हैपेंड, बोंकू बाबू केम अक्रॉस एन एलियन। ओके, एंड द मीटिंग ऑफ द एलियन गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, और फिर जाके उनको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बैक मिला। तो यही जो है ये स्टोरी है। नाउ गेटिंग इनटू द स्टोरी, टेक द बुक गाइस। ओके, सी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैं बताऊंगा, तो सब कुछ आप लोग क्या करना, आप बुक में पेंसिल से नोट डाउन करते जाना। ओके, नो वन हैड एवर सीन बोंकू बाबू गेट अक्रॉस, यानी कि किसी ने आज तक बोंकू बाबू को गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। टू टेल द ट्रूथ, इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट ही माइट से और डू इफ वन डे ही डिड गेट एंग्री। सो नोबडी हैज सीन बोंकू बाबू गेट एंग्री। Okay, even it is very difficult to see if he would get angry what he would do. वो चिल्लाएगा या फिर वो मारेगा किसी को, क्या कर सकता है अगर वो कभी भी गुस्सा हो गया तो। सो दिस इज
you cannot imagine it. Okay, so from the very beginning we are getting that Bonku Babu is very timid by nature. This is the first point, please note it down. Bonku Babu is very timid by his nature. It was not as if there was never any reason for him to lose his temper. For the last 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali at the Kakurgachi village primary school. So see, Bonku Babu, first of all, Bonku Babu has been teaching geography and Bengali for last 22 years. That means Bonku Babu is an experienced teacher. I hope you got the point. Bonku Babu is an experienced school teacher. And where did he टीच? ही टॉट एट काकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल. ये सब मार्क करते रहो, ये सब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. Every year a new batch of students replaced the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bonku Babu, mark करके रहो, the tradition of teasing poor Bonku Babu continued among all the students. So हर साल क्या होता है, पुराना बैच चला जाता है, नया बैच आता है, लेकिन सबके लिए मानो कि ये ट्रेडिशन सा बन गया है कि सब कोई बोंकू बाबू को परेशान करेगा. पुअर बोंकू बाबू मीन्स यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं, यहाँ पे पुअर माने अनफॉर्चुनेट. ओके, as he is being teased by everybody and he cannot do anything, he cannot speak up against them, so that is the reason he feels very helpless. A helplessness works in Bonku Babu. That is the reason it is said that he is poor Bonku Babu. Okay, some drew his cartoon. इसे भी मार्क करके रखो कि सब कुछ स्टूडेंट जो परेशान करता है, कैसे परेशान करता है. ओके, some drew his cartoon on the blackboard. Others put glue on the chair, or on the night of Kali Puja they lit a chasing rocket and set it off right behind him. तो क्या करता है कि वो सब कोई कोई क्या करता है, ब्लैक बोर्ड में बोंकू बाबू का कार्टून ड्रॉ कर देता है, या फिर कोई चेयर में ग्लू लगा देता है, या फिर काली पूजा के रात में क्या करता है, बॉम्ब फेंकता है किसके ऊपर, बोंकू बाबू के ऊपर. So this is something we should not do. Not only students should not do, we people should not do this kind of rude or this kind of nif kind of behavior. Okay, but Bonku Babu has been the victim for many years. Old students, new students replaced with the old students, but this is like a tradition for all of them to tease Bonku Babu. So Bonku Babu का और एक जो है हम लोग बोल सकते हैं कि he is all time victim. Right? He is all-time victim. Bonku Babu did not get upset by any of this. Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." तो बोंकू बाबू कभी कुछ नहीं बोलता है. वो सब इतना परेशान करता है, इतना टीज करता है, बट बोंकू बाबू कभी भी कुछ नहीं कहते उन लोगों को. Sometimes he used to say, "Shame on you boys." So this is also state of mindset of Bonku Babu. We can say that Bonku Babu has resigned to his fate. अब Bonku Babu ऐसा सोचता है कि जो कर रहा है करने दो उन लोगों को, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना, जो करना है कर दो. Somehow he has resigned to his fate. Got my point? One of the reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. So, वो जो हमेशा शांत रहता है, उसे इतना टीज किया जाता है, उसके बावजूद वो शांत रहता है. तो इसका एक रीजन क्या है कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता. क्यों? If he did lose his temper and left his job in a fit of pique, कि अगर गुस्से में आके वो सडनली कुछ डिसीजन ले लिया कि जॉब छोड़ दिया, he knew how difficult it would then be to find another at this age. So he knows it very well that if he loses his job, it is very difficult for Bonku Babu to find out a new job at his age. So he is afraid of losing job. Mark कर लो, note down कर लो. Okay, he is afraid of losing job. Another reason, और एक reason है, क्या है? Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. ओके, तो बोल रहे और एक रीजन है कि हर सेशन में क्या होता है, हर बैच में, कि स्टूडेंट मतलब एक क्लास में कुछ अच्छा स्टूडेंट्स रहता है, ठीक है, बाकी क्लास में पूरा प्रैंकस्टर्स भर्ती रहे वो अलग बात है, लेकिन हर एक क्लास में हर साल क्या होता है, कुछ अच्छा स्टूडेंट्स होता है. Teaching this handful of good boys was so rewarding that
टू बोंकू बाबू दैट alone मेड लाइफ एज अ टीचर वर्थ लिविंग। तो बस उन्हीं लोगों को पढ़ाने के लिए, उन्हीं लोगों को सिखाने के लिए बोंकू बाबू इतना एक्साइटेड रहता है कि उन लोगों को पढ़ाते हुए बोंकू बाबू फील करता है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूं। वाई? बिकॉज आई एम टीचिंग दिस काइंड ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ओके, एंड रियली गाइस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये ना एक सेटिस्फैक्शन का जगह है हम टीचर्स के लिए कि मतलब मान लो कि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स होता है जो रियली दे आर वेरी गुड। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू ऑल आर नॉट गुड, आप सब लोग अच्छे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तो इसीलिए बोंकू बाबू के साथ भी यही सेम फंडा जो है होता है कि उसका स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन की वो सब पूरा क्लास में भर्ती है प्रैंकस्टर्स, वो अलग बात है, लेकिन कुछ अच्छा स्टूडेंट्स है जिसे पढ़ाने में बोंकू बाबू को अच्छा फील होता है। ओके, एट टाइम्स he invited those boys to his house, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. So sometimes Bonku Babu calls them at his house, and he gives them to eat something. He tells them adventurous stories and many more things. He told them about life of Africa. सर्कल करो क्योंकि इसका रेफरेंस जो है लास्ट में हम लोगों को मिलेगा। ओके, सो ही टोल्ड देम अबाउट लाइफ इन अफ्रीका, the discovery of the North Pole, the fish in Brazil that eat human flesh, and about Atlantis. So Bonku Babu used to tell them about this. That means Bonku Babu himself is very much interested to visit these places. Got my point? मैं आपसे वही बात करूंगा जो मुझे पसंद है, या फिर आप मुझसे वही बात करोगे जो आपको पसंद है। सो बोंकू बाबू इतना सारी स्टोरी, इतना सारा कंट्री, इतना सारा देश रहते हुए भी बोंकू बाबू उन लोगों के इसी के बारे में बता रहे। दैट मीन्स बोंकू बाबू हिमसेल्फ इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू विजिट दोज प्लेसेस। The continent submerged under the sea. He was a good storyteller. This is one more interesting characteristic of Bonku Babu. He was a good storyteller. He always had his audience enthralled. यानी कि वो बहुत अच्छे, he is a good storyteller, और वो क्या करता है, हमेशा अपने ऑडियंस को एक्साइटेड रखते हैं। During the weekend, Bonku Babu went to the lawyer Sripati Majumdar's house. One more character we are getting, Sripati Majumdar, who is a lawyer. Okay. To spend the evenings with other regulars. That means mark karo, to spend the evenings with other regulars. That means Bonku Babu is having a habit of spending his time with friends or people. On a number of occasions he had come back thinking, enough, never again. तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बोंकू बाबू वहां से रिटर्न आया, मैं और कभी नहीं जाऊंगा वहां। The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys in his school, but when grown-ups, even middle-aged men started playing the fool with him, it became too much to bear. So क्यों वो ऐसा कभी कभार वो उस श्रीपति मजूमदार के घर से आके क्यों कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, एनफ इज एनफ? क्योंकि स्कूल में जब बच्चे उन लोग बोंकू बाबू के साथ प्रैंक करता है, सो इट इज टॉलरेबल, लेकिन अगर कोई ग्रोन अप मैन या फिर मिडिल एज्ड मैन अगर उनके साथ प्रैंक करेगा, सो डेफिनेटली ही कैन नॉट बियर इट। गॉट माय पॉइंट? सो बोंकू बाबू इज द विक्टिम not only in the school but also at the house of Sripati Majumdar's house, and from bacha to budha, everyone makes fool on him. So he is an all time victim, and we can say मतलब जहां पे बोंकू बाबू रहता है वहां पे बोंकू बाबू यूनिवर्सल विक्टिम है। ओके, at this addas that Sripati Babu hosted in the evenings, nearly everyone poked fun at Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. तो अब उस अड्डा में क्या करता है, सब कोई बोंकू बाबू का मजाक उड़ाता है, कभी कभार इतना करता है कि बोंकू बाबू का जो टॉलरेंस लेवल है वो मतलब छूट ही जाता है एकदम, मतलब मान लो कि वो खत्म हो जाएगा, अभी बोंकू बाबू कुछ रिएक्ट करके बैठेगा। ओके, सो ये जो लाइन है, समटाइम्स ब्रिंगिंग हिज एंड्योरेंस ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट, सो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोंकू बाबू बहुत टॉलरेट कर सकता है, ही इज अ टॉलरेंट। ओके, only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghosts. Usually Bonku Babu kept his mouth shut,
That day, for some unknown reason, he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. That was all. Mark करो, that was all. तो एक बार क्या हुआ, बस ये 2-3 महीने पहले का बात है. All the people at the adda, they were talking about ghost, and Bonku Babu was usually kept his mouth shut, but suddenly, I don't know why, even Bonku Babu himself doesn't know why, he told that I am not afraid of ghost. Bus. And all other people got an opportunity to tease Bonku Babu, but it was enough to offer a golden opportunity to the others. On his way back home later that night, Bonku Babu was attacked by a spook as he was passing under a tamarind tree. A tall, thin figure leapt down and landed on his back. As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. तो वो उस अड्डे पे बोंकू बाबू ने जो कह दिया कि मुझे डर नहीं लगता है घोस्ट से, भूत से, प्रेत से, चुड़ैल से, सो यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सबके लिए. बस उसी रात बोंकू बाबू, when Bonku Babu was returning his home, at that time he was attacked by a spook when he was passing the tamarind tree. Okay, and the figure that landed on him, it was completely smeared with black ink. And बोंकू बाबू ये भी सोच रहा है कि कहीं शायद उस अड्डे में जो था उन्हीं में से किसी ने ऐसा किया है, और उन्हीं लोगों के सजेशन से ये जो अपीयरेंस आया है या फिर मुझ पे लैंडेड हुआ है, उन्होंने ऐसा अपने आप को डिस्गाइज किया है भूत के रूप में. बोंकू बाबू was not afraid, so बोंकू बाबू is a brave person. Okay, he was not afraid, but he was injured. This is really very unfortunate. For 3 days, his neck ached. Worst of all, his new kurta was torn and it had black stains all over. What kind of a joke this was? तो क्या बोल रहा है कि बोंकू बाबू डरा नहीं, लेकिन उन्हें बहुत चोट आया था. ठीक है, 3 दिन तक उसका गर्दन जो है वो पेन किया. उसने नया कुर्ता पहना था उस दिन बोंकू बाबू, वो फट गया, उसमें पूरा एकदम स्टेन हो गया. Even so, Bonku Babu had to come to these meetings. If he did not, what would Sripati Babu think? Mark करो. इसके बावजूद भी Bonku Babu was very much sure that it was done or it was conducted by one of them who are there in the adda. Okay, but then also Bonku Babu used to come to the house of Sripati Majumdar. Why? Not only was he a very important man in the school committee and in the village, but could not do without Bonku Babu, who could provide amusement to all. So यहाँ पे 2 aspect जो है वो दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोंकू बाबू, उसके बावजूद बोंकू बाबू श्योर था कि अड्डा में जो सब है उन्हीं लोग, आई मीन वन ऑफ देम guided that particular spook to land on Bonku Babu. But then also Bonku Babu used to go to Sripati Majumdar's house. Why? Because वो ये सोचता है कि वो एक जाना माना इंसान है, एक फैमिलियर फेस है. ओके, तो वो क्या सोचेंगे? दैट मीन्स बोंकू बाबू केयर्स फॉर पीपल्स इमोशन. ये एक बहुत अच्छा गुण है बोंकू बाबू का, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, और वहां पे जो अड्डे पे जो था, इंक्लूडिंग श्रीपति बाबू, दे ऑलवेज कंसिडर्ड बोंकू बाबू एज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड इट शोज देयर चीप मेंटेलिटी. क्योंकि बोंकू बाबू पता है कि श्रीपति मजूमदार के घर में जो अड्डा बैठता है वहां पे बोंकू बाबू है जिसके ऊपर सब कोई प्रैंक करता है, मॉक करता है, फूल करता है. सो बोंकू बाबू इज द सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, इज द सोर्स ऑफ फन एट द अड्डा, एंड दे ऑल कंसिडर्ड बोंकू बाबू so it shows their cheap mentality. On the other hand, Bonku Babu cares for the feelings of people. That is the reason, though he knew it very well that it was done, it was conducted by one of them from the adda, but then also he used to go to the adda. Why? Because he thought, what would Sripati Babu think? On one particular day, the topic of conversation was space. In other words, they were talking of spaceship and space travel. So अब क्या हुआ, और एक दिन का बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस दिन उन लोग का टॉपिक क्या था, स्पेसशिप. ओके, soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. A similar light was seen 3 months ago, which had led to much speculation. In the end, it had turned out to be a Russian satellite called खोटका, or was it फोस्का? So उस दिन का टॉपिक क्या था, स्पेसशिप और स्पेस ट्रैवल. क्योंकि
नॉर्दर्न स्काई में, ठीक है, आफ्टर सनसेट एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा गया था, एक मूविंग लाइट को देखा गया था, और बाद में पता चले वो क्या है, वो रशियन सैटेलाइट है जिसका नाम खोटका या फिर फोस्का. Anyway, this satellite was supposed to be going around the Earth at a height of 400 miles and provide a lot of valuable information to the scientists. So it was Russian satellite, and it's supposed to be going down the Earth at a height of 400 miles, and it would provide many informations to the scientists. तो यहाँ पे भी एक MCQ आ सकता है, ठीक है, 400 माइल्स को लेकर. Okay. That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. Then he called Nidhu Babu and showed it to him. However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first person to see it. इसे पूरा मार्क करके रहो. तो पहले कौन देखा? पहले बोंकू बाबू ने वो देखा, फिर बोंकू नीधू बाबू को बुला, आइए आइए देखिए देखिए क्या है, देखिए. अच्छा, नीधू बाबू ने भी देखा, लेकिन जब बाद में मीटिंग में गया बोंकू बाबू, तो वहां पे देख रहा है कि नीधू बाबू जो है वो पूरा क्रेडिट अपने से ले लिया कि या आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे नीधू बाबू का भी एक कैरेक्टरिस्टिक आता है. क्या है कैरेक्टरिस्टिक? कि ही इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर. ओके, ही इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर and was boasting a great deal about it. Bonku Babu said nothing. No one in the group knew much about satellites, but that did not stop them from offering the views. Said Chondi Babu, somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky, and the press gets all excited about it. All humbug. So, though they did not have much idea or much knowledge about spaceship, but it did not stop them to offer their own opinion. Okay. Ramkani encountered his remark. He was still young. No, it may not be any of us here, but it is a human achievement, surely, and a great achievement at that. अब रामकाना भी क्या करें, यहाँ पे अपना एक रिमार्क दे रहा है कि नहीं, ये जो स्पेसशिप है इसमें क्या है, ये हम लोग का एक बहुत एक मतलब अचीवमेंट है. Well, you would not expect a bunch of monkeys to do that, would you? तो अब बोला कि नहीं, अब देखो तुम बोले ह्यूमन अचीवमेंट है, डेफिनेटली ह्यूमन अचीवमेंट ही रहेगा. You cannot expect that a troop of monkey would do that. All right, said Nidhu Babu, let's no talk of satellites. After all, it's just a machine going round the earth, they say. ठीक है, देखिए वो सब छोड़ो, ये क्या है? ये सिर्फ एक मशीन है जो घूमता रहता है. No different from spinning top. A top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you press a switch. ये एक जस्ट वो लट्टू के जैसा होता है, एक टॉप के जैसा होता है कि अगर तुम उसे घुमाओ तो वो घूमता रहेगा. फैन के जैसा कि तुम स्विच प्रेस करो तो वो घूमता रहेगा. दिस इज नथिंग बट अ मशीन. ओके. A satellite is the same, but think of a rocket that can't be dismissed so easily, can it? So leave the topic of a spaceship or space travel. Just rocket के बारे में सोचो. You cannot avoid rocket, right? Chondi Babu wrinkled his nose. ऐसे, okay, a rocket. Why? What good is a rocket? All right, if one was made here in our country, took off from the Maidan in Calcutta. Calcutta अभी वो कोलकाता है. Okay, and we could all go and buy tickets to watch the show. Well, then that would be a nice. But क्या बोल रहे तुम? रॉकेट ऐसा नहीं है क्या? रॉकेट अगर ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे बनाया गया है और कोलकाता में जो मैदान नाम का जो जगह है, ओके, मैदान से एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तब हम लोग टिकट खरीद के जा सकते थे देखने के लिए. उसके बावजूद इसको अलावा इसका कोई वैल्यू नहीं है. यू आर राइट, रामकानी एग्रीड. अ रॉकेट हैज नो मीनिंग फॉर अस इन दिस विलेज. यू आर राइट, क्योंकि हम इस विलेज में रॉकेट का कोई मीनिंग नहीं है. भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट. सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ. अब भैरव चक्रवर्ती और एक कैट है, वो बोल रहा है अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट से कोई क्रिएचर हम लोग के यहाँ पे आया. So what? Even if he did, you and I would never be able to see it. रामकनाई ने कहा. ठीक है, तो क्या हुआ? अगर आग आता है तो आने दो, मैं और आप तो उसे नहीं देख पाएंगे ना. Yes, that's true enough. हाँ, ये भी सही बात है, हम लोग कहाँ से देखेंगे? Everyone turned their attention to their cups of tea. There did not seem to be anything left to be said. After a few moments of silence, Bonku Babu cleared his throat and said gently,
सपोज सपोज दे केम हियर, तो अब उन लोगों ने देखा कि अपनी चाय की कप की तरफ देखा, वहां पे और कोई टॉपिक नहीं है, दैट मीन्स दे वर डिस्कसिंग ओवर अ कप ऑफ टी। ओके, तो अब बहुत देर सब सारा बात सब कोई बात कर रहे हैं, वहां पे बोंकू बाबू एकदम साइलेंट है, चुपचाप है। ठीक है, तो अब बोंकू बाबू ने कहा अगर अगर मतलब वो हमारी यहाँ ही अगर कोई आया तो, मतलब एलियन। Neeru Babu feigned total amazement. Hey, Bunkum wants to say something. What did you say, Bunkum? Who is going to come here? Where from? अरे देखो 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 देखो, बुंकू बाबू क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, बुंकू बाबू क्या बोल रहे, किस कौन आएगा यहाँ पे और कहाँ से आएगा? बुंकू बाबू repeated his word, his tone still gentle. Suppose someone from a डिफरेंट प्लैनेट केम हियर। नहीं, अगर मान लो कि डिफरेंट प्लैनेट से कोई हम लोग के यहाँ पे काकुरगाची गांव में अगर आया, as he did so often, Bhairav Chakravarti slapped Bonku. So this is very incivility of Bhairav Chakravarti. Okay, वो ऐसे टैप किया। Okay, Bonku's back loudly and rudely, grinned and said, "Bravo! What a thing to say! Where is a creature from another planet going to land? Not Moscow, not London, not New York, not even Calcutta, but here in Kakurgachi. You do think big, Bonku, don't you?" अच्छा 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 अच्छा, तो भैरव चक्रवर्ती उसके ऐसे किया वो, अच्छा अच्छा, तो दूसरे प्लेनेट से कहाँ आएगा यहाँ पे? वाओ, वेरी गुड। कोलकाता में नहीं, मॉस्को में नहीं, लंदन में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, एकदम सीधा वो लोग आएगा कहाँ? इस गांव में, काकुरगाची गांव में। तुम ना बहुत बड़ा सोचते हो, है कि नहीं? बोंकू बाबू फेल साइलेंट, वो बेचारा चुप हो गया। ओके, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर वेरी डोमिनेटिंग। But several questions rose in his mind. Was it really impossible? क्या ये सही में impossible है? If an alien had to visit the earth, would it really matter where it arrived first? It might not aim to go straight to any other part of the world, or right? It was highly unlikely that such a thing would happen in Kakurgachi village. But who was to say for sure that it could not happen at all? ठीक है, अगर अब बुंकू बाबू सोच रहे क्या ये सही में इम्पॉसिबल है? अब बात क्या है, अगर दूसरे प्लैनेट से कोई आएगा, अगर वो लोग अर्थ में आना चाहेगा तो क्या होगा? अगर अर्थ में आना चाहेगा वो लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं कि वो चूज करेगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा वहां पे जाऊंगा। लेकिन डेफिनेटली ये काकुरगाची में छोड़ो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉसिबल है। ओके, तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, पेज नंबर 73 तक। प्लीज आप लोग मार्क कर लो और एक बार स्टोरी को पढ़ो। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसे, क्योंकि देखो अभी ऑलरेडी लगभग आधा घंटे का वीडियो हो गया। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं इसे 3 पार्ट में करने के लिए। लेट्स सी, आप लोग स्टोरी को पढ़ो, समझो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे लिखो, मैं डेफिनेटली आप लोग को हेल्प करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और मेरा न्यू बैच भी शुरू हो गया है, सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एक्सेल लर्निंग, प्लीज डीएम मी, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। ओके ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।